Now, there seems to be no relief coming from the courts for the Delhi Chief Minister, Mr. Arvind Kejriwal. Not only did the Delhi High Court uphold his arrest yesterday as legal, a Delhi court today has now refused to increase the number of legal meetings that he can be allowed. Now, this double legal setback set the ground for fear-mongering by Kejriwal's generals. The Aam Aadmi Party Member of Parliament, Mr. Sanjay Singh, now out on bail, has declared that basic human rights have been denied to the Delhi Chief Minister in jail on the instructions of the BJP government. In fact, he went to the extent of saying that Tihar jail is now being turned into a Nazi gas chamber. He claims that Mr. Kejriwal is not allowed to meet others, including members of his family as well as his legal team, despite having permission to do so. Swiftly, the Tihar jail authorities have released the health bulletin of Arvind Kejriwal, which counters some of the claims being made by Mr. Kejriwal's party colleagues. Far from being tortured in what they've described as a gas chamber, Arvind Kejriwal's weight has actually gone up by 1 kilogram, from 65 kilograms since the time of his arrest to 66. He was arrested, remember, on the 1st of April. His blood pressure and sugar levels fluctuated mildly, but are known to be under control and stable. Remember, earlier as well, the Aam Aadmi Party Minister Atishi had alleged that Mr. Kejriwal had lost approximately 4.5 kilos during his 4 days of incarceration. After that, the Tihar jail authorities countered that claim with a health bulletin showing that his vitals continue to be normal. Nonetheless, Sanjay Singh has again claimed today that his basic rights are being denied. He once again compared Tihar jail to a Nazi gas chamber. दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। जो न्यूनतम मानव अधिकार है किसी व्यक्ति के, जो न्यूनतम अधिकार बड़े से बड़े अधिकारियों को, अपराधियों को भी दिए गए हैं, वो अधिकार भी नरेंद्र मोदी जी छीन रहे हैं। क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप यातना घर के रूप में तब्दील करना चाहते हैं? आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं, वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिए। जेल के अधिकारी अपनी ओर से काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तुम्हारी चप्पल उठाने के लिए बने हम लोग? देश में दादागिरी करोगे? नैतिकता सिखा रहे हो हमें? उत्तर भारत के बड़े बड़े नेताओं को, एक आदिवासी नेता को, हेमंत सोरेन को आपने जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। फर्जी मुकदमे लगाओ, जेल में डालो, फिर नैतिकता पे बता रहे हो। एक मुख्यमंत्री पंजाब के, एक सांसद दिल्ली के सामान्य तरीके से एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी, और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। ये कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है अपने बारे में, आप सोच सकते हैं। Now, let's get you some details of Arvind Kejriwal's health bulletin released by the Tihar jail authorities. His weight increased by 1 kilogram from 65 kgs to 66. His BP looks to be stable. On the 1st of April, it was 120 by 82. And on the 8th of April, it stood at 136 by 72. His sugar was at 139. On the 1st of April, it went up to 184. On the 7th of April, it was back to 130, and that stayed on the 8th of April as well. Now, as this particular health chart by Tihar jail reveals, Chief Minister Kejriwal's health does not seem to be deteriorating, as the Aam Aadmi Party has been claiming. Now, the Bharatiya Janata Party has hit out at the AAP, saying that they are making absolutely baseless claims after the courts have refused to give Mr. Kejriwal any immediate relief. संजय सिंह के द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, झूठ है। अभी उनकी धर्मपत्नी और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी विभव मुख्यमंत्री को मिले हैं, और यदि कोई
ऐसी शिकायत थी जो संजय सिंह ने मीडिया को बताया है। तो मंगलवार को हाईकोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी हाईकोर्ट को क्यों नहीं दी? हम उनसे पूछना चाहते हैं, जेल के जो नियम हैं वो आम हो कोई खास हो, सभी के लिए बराबर है। जेल के नियम उनको 2 बार मिलने की अनुमति देते हैं, वो अनुमति उनको दी जा रही है। संजय सिंह 6 महीने तक स्वयं जेल में रह के आए हैं और उनको मालूम होना चाहिए कि जेल के नियम क्या है, उनको अच्छे से मालूम है, लेकिन सनसनी फैलाना ये इनका काम है। Well, let's take this across to our guests and let me introduce them at the outset. Ms. Charu Pragya, spokesperson of the BJP, joins us, as does Mr. Kailash Adhikari, the MD of Governance Now. Uma Sisodia ji joins us from the Aam Aadmi Party, and Zeeshan Haider also joins us. He's a political analyst. Ms. Sisodia, coming to you first. Do you believe that Arvind Kejriwal's claims are now untenable, including that of his party colleagues? वो तो कह रहे हैं उनको कोई लीगल एक्सेस नहीं मिल रहा, उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट होती जा रही है जेल में, लेकिन तिहाड़ जेल की बुलेटिन कुछ और ही कहती है। देखिए, आतिशी जी ने जो अरविंद केजरीवाल जी की हेल्थ के बारे में जो उन्होंने बोला, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जी जब से जेल में हैं और उनकी हेल्थ लगातार खराब होती रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन उन्होंने, एक इमोशनल कनेक्शन उन्होंने उनके Mr. Sodia, we're having a slight issue with your audio. We'll try to patch that again, ma'am. हम आपके पास फिर से आएंगे. But Charu Pragya, coming to you, what do you have to say about the rebuttal that's now been issued, the counter on the part of Tihar jail authorities? Earlier, there was a claim made by Aam Aadmi Party Minister Atishi that Kejriwal's weight is actually depleted, has gone down by 4.5 kilograms. That does not appear to be the case. His health at least appears to be stable behind bars. So basic human rights have not been denied. That's the claim coming from the Tihar authorities. Absolutely. And Siddharth, Aam Aadmi Party has made a complete laughing stock of itself. All netizens were asking, what is this magical diet which makes a person lose 4.5 kilos in not even 2 weeks? So instead of bringing down the political discourse to such a cheap level, it would have served them well if they had answered all the pointed questions being raised by us and the courts and the investigative agencies regarding the liquor scam. Arvind Kejriwal ji's weight is up, he's relaxing, he's having a good time, his sugar is stable, his blood pressure is stable, and he should just take a page from the book of Satyendra Jain himself, because if you remember, he claimed that there was a physiotherapist who was looking after him. Turned out that he was taking massages from a POSCO accused behind bars. So honestly, I think the people of Delhi are both disgusted and amazed at the level at which Aam Aadmi Party can bring this discourse down to, and I don't even want to dignify it with any further comments on this. Right now, I'm more interested in how the High Court of Delhi has observed that prima facie there seems to be evidence against him. Prima facie, it seems that he was involved in the Delhi liquor scam both in his personal capacity and in his capacity as the convener of the Aam Aadmi Party. They do not see it fit to give him bail currently, and this is what our focus needs to be. In fact, let me go across to Mr. Zeeshan Haider for his perspective on this. Mr. Haider, do you believe that Mr. Kejriwal should remain as the Chief Minister of Delhi while continuing to remain behind bars? Now, he's tried to take legal recourse. He's approached the Delhi High Court. The Delhi High Court has refused to give him any relief. He's appealed to the Supreme Court. The Supreme Court has, for the time being, refused to give him an urgent hearing. It will eventually hear the matter. It remains to be seen as to when that will happen. But for the time being, he appears to have exhausted his legal measures and therefore remains behind bars. So in this situation, should he remain Chief Minister, sir? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सारे जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं उन सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं, और आपको भी जी जी थैंक यू। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर डाल दिया गया है, और ये मैं फिर से यही कहूंगा कि ये एक अघोषित मतलब जो है वो आपातकाल है। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो दिख रही है सबको लेकिन मतलब अनडिक्लेयर्ड है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल के आती है कि अगर सारी दिल्ली की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से रहकर सरकार चलाएं, तो इसमें कोई हर्ज इसलिए भी नहीं है कि देखिए बाइज्ड है सारी एजेंसीज
चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जैसा कि सबको पता है, जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि 2024 के इलेक्शन में सबको रोका जाए। और लेकिन बीजेपी मिस्टर हैदर, अगर मैं उस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करूं, क्योंकि अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट के 106 पेजेस की जो जजमेंट है, अगर वो आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक मुद्दा अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी उठाया था जब वो केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि जानबूझकर ईडी ने उनको इलेक्शंस के ईव पर अरेस्ट किया है ताकि वो कैंपेन ना कर सके। इस आर्ग्यूमेंट को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने काउंटर किया है कि 9 बार अरविंद केजरीवाल जी को समन किया गया था 6 महीनों के दौरान, और उसके बावजूद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के साथ उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। सो दी दिल्ली हाई कोर्ट हैज एक्चुअली डिबंक्ड द आर्गुमेंट अबाउट द timing of Mr. Kejriwal's arrest. Let me in fact take that across to Mr. Kailash Adhikari as well. Mr. Adhikari, do you believe that any of the arguments that have now been put forward on the part of the Aam Aadmi Party questioning the legality of the arrest, questioning the timing of the arrest, do they actually stand to any scrutiny right now, given that a higher court of law has adjudicated in a very categorical manner in this case? You know, all the accusations which are made by the Aam Aadmi Party hold no merit, and the order given pronounced by the Honorable High Court of Delhi, clarifies it. Firstly, as they mentioned about the timing and political vendetta, Aam Aadmi Party has been just crying political vendetta. The kingpin, the Delhi Chief Minister, has never come out in the public, nor in front of the enforcement agencies and investigative agencies of this country. 9 times he was summoned, and 9 times he is not going. As a Chief Minister, what moral right does he have to continue as a Chief Minister when he is not even respecting the law of the land, and the law and the rules which are set up by the investigative agency? If he has nothing to hide, why couldn't he go for 9 times? So it has become a fashion of a sort just to cry political vendetta, because you are at fault. अपनी गिरबान में झांक के देखने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसके लिए कोई और रीजन यहाँ पे दिए जा रहे हैं. Mr. Adhikari, Ms. Pragya, as well as Mr. Haider, please remain on the broadcast. We're taking a short break right now. We'll come back and continue this debate on the other side. Stay tuned. Our debate, and I believe that we have Ms. Uma Sisodia back with us again. Ms. Sisodia, we had an issue with the audio there, so apologies for that. But my first question to you is it tenable anymore for Mr. Arvind Kejriwal to remain Chief Minister behind bars after having exhausted all his legal relief? Almost all. There's an appeal in the Supreme Court still pending. Please continue. आज आम आदमी पार्टी पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने की अपनी जो लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ है. कितना आसान हो जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते हैं, तो ये एक नजीर बन जाएगी कि आप किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री जी पर कोई भी आरोप लगा दीजिए और उनको बिना सबूतों के आप जेल के अंदर बंद कर दीजिए और उसके बाद आप उन पर दबाव डालिए कि अब आप इस्तीफा दीजिए. इस तरीके से तो आप हमारे देश की हर ओपोजिशन की, जो भी राज्यों में ओपोजिशन की सरकारें हैं, आप हर मुख्यमंत्री को यही बोल देंगे और ऐसे ही दबाव डालकर आप उनसे इस्तीफा लेंगे, तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा कैसे? अरविंद केजरीवाल इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप इस तरह से किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने आके आरोप लगा दिया. चलिए मैं आरोप लगा देती हूँ कि आपने मेरे से 5 करोड़ रुपए लिए, तो क्या आप अपनी नौकरी छोड़कर जेल के अंदर चले जाएंगे या ईडी आपको आकर गिरफ्तार कर लेगी बिना किसी मनी ट्रेल के? कोई किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगाए और उसके बाद आप उनको जेल में डाल दीजिए और फिर कहिए कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए. ये गलत है. आज हाई कोर्ट ने भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, फटकार लगाई है, जो बार बार बीजेपी वाले भाग भाग के जो अपनी प्लिया वापस दे रहे हैं हाई कोर्ट में. मैं फिर भी कहती हूँ, देखिए एलजी साहब आपके हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, सरकार आपकी है, आप बर्खास्त कर दीजिए अरविंद केजरीवाल जी को और राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए. ये रस्साकशी क्यों? ये बार बार आम आदमी पार्टी पर दबाव क्यों? आप लगाइए राष्ट्रपति शासन, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए राष्ट्रपति शासन, जनता अपने आप जवाब देगी आप लोगों को. इस समय पूरा देश. The Aam Aadmi Party adamant that there is vendetta against its leaders, including Mr. Kejriwal. Ms. Charu Pragya, a final word from you. There was another development today. Rajkumar Anand, the minister in the Aam Aadmi Party government, has decided to resign, saying that he believes that the party is corrupt. He himself faces an ED case. Now, will the Bharatiya Janata Party sign on the dotted line and say that Mr. Rajkumar Anand will never join the BJP, will never accept him into our ranks? So let's first debunk all the theories which are being floated around by Aam Aadmi Party. Number one,
You are the one who's creating history by going behind bars by not resigning. Resigning does not mean the government is falling. Resigning still means that you are finding someone to take your place. Or is Aam Aadmi Party thinking that all 62 MLAs out of 70 in Delhi are so incompetent that not even one can take the place of Chief Minister Kejriwal? And that's a very valid question. Please tell me, you have 62 MLAs. सरकार गिरने की यहाँ पर बात ही नहीं है. सरकार गिरने का नैरेटिव फ्लोट क्यों कर रहे हो? पिछले 10 साल में this particular government, Modi government, ने एक भी प्रदेश की एक भी सरकार नहीं गिराई है. That's a fact. Previous years, 84 governments have been felled by UPA. So look at the numbers and then you speak. So please find a replacement, because even Laluji found a replacement. Rabri ji was in power. Hemant Soren found a replacement before he went behind bars. And please don't speak as if all that matters is you. You have completely put down the... I have to interrupt you there, Ms. Pragya. That's all the time that we have for this debate. But many thanks for your participation to all our guests as well. We're taking a short break right now. Our coverage will continue on the other side.